in your own research journey and in making your own um, publications and outputs effective and substantial. Please, everyone, be on mute. I can see Atul Rai ji, आप unmute हैं, and please take care, everyone, to remain on mute. She will be making her valuable presentation, and you can have the questions and answers in the last half an hour. So, welcome, Semiapa. Welcome to our FIP. As you can see, we have more than 200 participants. Yes, I can see that. All eager to hear you. So it's over to our resource person today. And everyone, please be on mute now. Thank you so much. All right. So I'm sorry I've had a bit of trouble joining in. Can you hear me? Yes, ma'am. 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 All right. All right. All right. Are we ready? Can you hear me? Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Yes. I'm getting it in echo actually. मैम आपकी आवाज इको हो रही है। मैम इको हो रही है आपकी आवाज। आपका डबल आ रहा है। I think, ma'am, you have joined from two devices. Repeat हो रही है आवाज। Wait. मोबाइल और लैपटॉप दोनों। All right. There's an echo. I'm trying to set it right. मैडम आपके दोनों एक तो मोबाइल और लैपटॉप दोनों खुले हैं मेरे ख्याल से। मैम दो सिस्टम आपका अपलोड है काम कर रहा है इसलिए। Hello, is this better? मैम स्टिल इको हो रहा है। आपके मोबाइल से लॉक इन है जरा लैपटॉप से। So can I remove it from your mobile so you can? Shall I rejoin? Hello. मैम आपको मोबाइल से आप जो लॉग इन है वहां से Speaker of the laptop. या तो मैम अपनी लैपटॉप की वॉइस खत्म बंद कर दी है या मोबाइल की वॉइस बंद कर दी। Now it's right. Because Now is it okay? Right, let's start. yes, okay now. Sorry for the delay. All right, let's get going. So, yes. Now, good morning. It's a very warm welcome. Very good morning, ma'am. Right. Good morning, So, ma'am. if you mute yourselves, we'll begin talking. All right. So, today we are going to discuss plagiarism. Right? Now, nowadays, plagiarism is of special interest because we have to be extra cautious about it. And all the time, everybody is telling us, plagiarize mat kariye, be very careful that you don't get in notes from somebody else. And agar aapke kaam mein plagiarism pakda gaya, to there will be a lot of trouble. So, what people tell me, what young teachers tell me is that, ma'am, we hear a lot about plagiarism. We have by and large understood what plagiarism is. And the problem is that nobody tells us how not to plagiarize. All right. So this is what we are going to attempt to answer in today's session.
that how not to plagiarize. All right, so that is the major question that we are going to answer. So now let's see. Let us begin by understanding what plagiarism is. Now, plagiarism, what do we understand by plagiarism? Plagiarism is much hyped. We have a plagiarism policy in every university. We have plagiarism checkers in every university. And we are particularly concerned about plagiarism in PhDs. Now, you are young lecturers, so आप लोगों में से कई लोगों की PhD अभी चल रही होगी. All right. आप लोग गाइड भी कर रहे होंगे. And we will begin by understanding what is plagiarism. See, this session is not concerned with saying that you have plagiarized or I have plagiarized. We are talking about how to stop our students from plagiarizing. Okay? So none of us needs to go through any embarrassment regarding this. All right, so let us begin by understanding what is plagiarism. Right, so plagiarism means taking somebody else's work, passing it off as your own. Yes, somebody's raised a hand. क्या कहना है आपको? बताइए. Is it by mistake? Lokinder Singh? Yes, ma'am. आप कुछ कहना चाहते? You raised a hand. Was it by mistake? All right. By mistake. Okay. That's okay. All right. So what is plagiarism? That's what we are concerned with. So let us try to understand. Now, by and large, it means taking somebody else's work, passing it off as your own, and not giving a citation for whoever's work we have taken. All right, so it is called a literary theft. अब कोई आके हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले, so that we agree is wrong. Similarly, an author's work is the author's intellectual property. So we cannot allow anybody to plagiarize our work, to pass it off as their own. They cannot do that. That is an offense. One can be taken to court. One can be dismissed from service. Students can be rusticated. So, yes. So, students can be rusticated and the university gets a bad name, the college gets a bad name, reputation खराब होता है. देखिए अपने सब्जेक्ट की कम्युनिटी में रेपुटेशन एक बार खराब हो गया तो बहुत मुश्किल है उसको रीस्टैब्लिश करना और ये बातें बहुत तेजी से फैलती हैं. All right. Now, how can we define plagiarism? We have to keep everything original. जो आइडियाज हम अपने कंक्लूजन में लिखेंगे वो ओरिजिनल होने चाहिए, किसी दूसरे के नहीं.
Okay? This was a concept in the 19th century which was introduced by Rousseau, the philosopher. And since then, we have understood that it's not okay to copy other people's work. Right. Now, plagiarism can cause copyright infringement. देखिए, copyright एक rule होता है. That means I own the text. और अगर आपको कोई पार्ट उसका इस्तेमाल करना है तो आपको मुझसे परमिशन लेनी होगी, ऑथर से परमिशन लेनी होगी. आपकी कोई किताब है, अगर किसी को आपका कोई पार्ट इस्तेमाल करना है तो उनको परमिशन लेनी होगी. ट्रांसलेट करना है तो आपसे परमिशन लेनी होगी. अगर उन्हें छोटा कोटेशन लेना है तो वो साइटेशन यूज कर सकते हैं. ओके, हम प्लेजराइज क्यों करते हैं, कैसे? लगता है मैम लेफ्ट हो गए हैं. Okay, participants, please be there because madam got disconnected. थोड़ा network issue था इस वजह से. Is coming back. आवाज नहीं आ रही क्या?
कोई क्लास नहीं हो रही क्या? मैम कुछ देर के लिए लेफ्ट हो गई हैं, अभी आ रही हैं। बी पेशेंस। ओके टेक्निकल नेटवर्क का टेक्निकल इशू है, क्लास तो होगी। अरे अब तो हम लोग तो बातचीत कर सकते हैं तब तक, जब तक मैम Sorry, ना। please, 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 सर please. एक्चुअली रिकॉर्डिंग पर रहता है इस समय, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ओ, यूजीसी। हाँ, तो कोई ऐसा मतलब वो नहीं है सर। प्लेगरिज्म में हम लोग कुछ कहीं से लिख करके दिए, सेम टू सेम है ना, और Vinay sir, रेफरेंस please. निकाल दिए। Vinay sir, please. All right, I'm sorry about the disturbance. Let us start from where we were. We were talking about plagiarism. All right, because there have been disturbances. Please tell me, is there any problem? Is there something No, that's not understood? No, madam. No, ma'am. No, ma'am. No, madam. All right, so we should go ahead. No So problem, ma'am. I'm telling you that why do we plagiarize at all? You see, sometimes we decide. I was giving the example of a student who decides that मेरी तैयारी नहीं हुई है, I will cheat. So that person copies from the one sitting next to him. That is plagiarizing. You know, copying somebody else's material. But there is one very important reason. You see, the way we studied in school, जब हम स्कूल में थे तो हम क्लासरूम में we used to be taught by a class teacher. If the class teacher had a textbook, for example, your English reader, the teacher would say that, you know, at the end of every lesson, we have questions. Remember, in school we had questions. Yes. And the teacher would say that the answer for question number 1 is this. It is in the first paragraph. और बच्चे क्या करते थे? They would put brackets and they would write answer A. Yes? And you would learn it up by heart. And when you wrote that in your classwork,
or examination, then the teacher would say, very good. Now that became a habit, that this is the way to study. But actually that is a training in plagiarism. Because हम बिल्कुल repeat कर रहे हैं what we see in the textbook. And we are not supposed to do that. That is plagiarism, but it's a method that was taught in school. You know, at the BA level, what do students do? जो आपने क्लास में कहा है, उसको reproduce करते with some a bit of added material. So that is the issue. Now what happens is that to get this out of our system is a difficult job. What else do students do that makes them plagiarize? Seniors ke notes. Taking notes from seniors is plagiarism. Because वो notes आप student ने खुद नहीं बनाए, senior के notes ले लिए और ये plagiarism हो गया. Right? This is wrong. तीसरा क्या? Parents, tutors, coachings. They help a student to write answers. Ready-made answers on the internet. अगर पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं एक बच्चे को, तो उन्हें उनके आंसर्स नहीं लिखने चाहिए. राइट? ट्यूटर्स शुड नॉट राइट देयर आंसर्स. ये प्लेजरिज्म हो गया. एंड प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम कोविड के दौरान बहुत बढ़ गई. कट एंड पेस्ट. What do students do for assignments? Cut and paste from the internet. So this is the problem that we are loaded with. All right. So much. Have you understood? Right. So what we have understood so far is that plagiarism is wrong. Plagiarism can be real or accidental. You know, it can be deliberate or it can be accidental. Right. And then, moving beyond that, I'm giving you a definition. It's, write this down. Plagiarism is a wrongful appropriation. Wrongful appropriation. That means putting it inside your own work. And publication of another author's. Now it's a list of 4 things. Language, ideas, thoughts, and expressions. Language, ideas, thoughts, and expressions. Right. Now, it means violation of intellectual property, as already said. This word, plagiarism, this comes from Latin. It's a Latin word, plagiaris. P-L-A-G-I-A-R-I-U-S. And the meaning is kidnapper. Kidnapper. That means we kidnap. What do we kidnap? Ideas, thoughts, expressions, and language. All right? And you have also understood that we can plagiarize accidentally. And that is the more worrying part. You see, even at the PhD level, if we are reading,
Sometimes thoughts and ideas stick in our minds. They stick so long that we start to believe they are our own, कि ये हमारे ideas हैं, और हम उसको पेपर पे डाल देते हैं, और बाद में कोई पॉइंट आउट करता है कि ये प्लेजरिज्म है. Okay. What happens if you plagiarize? See, number one, the author's reputation is plagiarized. अगर मेरे ऊपर इल्जाम लगता है प्लेजरिज्म का, तो मेरा रेपुटेशन गया, पूरी टीचिंग कम्युनिटी में गया. Everyone's going to talk about it, and you know, the subject community is not going to look upon it kindly. हमें लगता है किसी को नहीं पता चलेगा, अक्सर लोगों को लगता है, लेकिन जो सब्जेक्ट की कम्युनिटी है वो बहुत क्लोज नेट है. देखिए, सिलेक्शन कमिटीज में वही लोग आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, और दूसरी यूनिवर्सिटी के आते हैं. एक बार ये बात हो गई दैट फला कॉलेज में तो बहुत प्लेजरिज्म होता है, कई केसेस आ चुके हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन का रेपुटेशन बर्बाद हो जाता है. मैं आपसे क्षमा चाहूंगा जी. मैं निर्भय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बीबीपीजी कॉलेज. जी. मैम, अभी आपको स्पीकर में आपको राजस्थान में एक वाइस चांसलर की नियुक्ति हुई है. जी. उन पर 1 साल में 23 किताब लिखने का मतलब आरोप था. और आपको आरोप के वजह से वो आपको वर्धा विश्वविद्यालय से मोतिहारी विश्वविद्यालय में शिफ्ट किए गए और अभी वाइस चांसलर बन के चले गए. जी. तो फिर इसको हम कैसे देखें? अब देखिए, ये तो पॉलिटिकल फैसला है, इसको तो हम यहाँ करेक्ट नहीं कर सकते. ये सेंटर का फैसला है और इसको यहाँ डिस्कस करना मुनासिब नहीं होगा. ओके, ये एक एकेडमिक फोरम है जिसमें मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ सिर्फ कि व्हाट इज प्लेजरिज्म, हाउ टू अवॉइड इट. आई एम नॉट डिस्कसिंग द अपॉइंटमेंट्स ऑफ वाइस चांसलर्स. आई कांट, ये आउट ऑफ जुरिसडिक्शन है मेरे लिए. ऑल राइट. तो डॉक्टर शुभ्रांशु. यस मैम. बताइए. मेरा आप एक प्रश्न था कि जैसे एक मेरा मित्र है, मेरा नोट्स जो क्लास नोट्स ये मतलब पहले के बनाए गए थे, और जी. वो क्लास नोट्स को बाद में फिर से जैसे जब कोविड का समय चला तो ऑनलाइन सबको क्लास मैटर वगैरह अपना डालना था. जी. तो उसने मेरी हैंड राइटिंग में लिखे हुए, मतलब कुछ को तो उसने चेंज किया अपनी हैंड राइटिंग में, और कुछ को हैंड राइटिंग में लिखा हुआ ही एज इट इज डाल दिया. मतलब कि वेबसाइट पे उससे केवल मेरा नाम हटाया. और लेकिन अब क्या मैं अगर उसको यूज करता हूँ तो वो उसका कॉपीराइट माना जाएगा कि मेरा माना जाएगा? देखिए, पहले तो आप उससे ले लीजिए, क्योंकि उसने मैडम फोटोकॉपी करा के वो सारी चीजें यूज की हैं. हाँ, तो आप उसको कन्फ्रंट करिए, आप उससे बात करिए. उसको शायद मालूम नहीं होगा कि उसने कितनी सीरियस बात की है. वो आपके मित्र इस फोरम में तो नहीं है आज? नहीं, इस फोरम में नहीं है आज. हाँ, वरना उनको समझ में आता है. वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में है. जी. जी. तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत कम है. कॉमन टीचर के पास प्लेजरिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है. ये इसीलिए ये सब लेक्चर्स ऑर्गेनाइज हुए, लोगों को रिफ्रेशर्स करने चाहिए. ये इंफॉर्मेशन नेसेसरी है. अब आप कॉलेज में, आपका अपॉइंटमेंट हो गया, आप पढ़ा रहे हैं, आपने स्टूडेंट्स के लिए लगा दिए नोट्स, लेकिन अब जिसके नोट्स हैं वो पर्सन का राइट है कि वो ये उनको मना करे, उनसे कहे भाई इसको हटाओ, और ये मेरे नोट्स हैं, तुमने मेरी हैंड राइटिंग में लगा दिए, अब आप इसको अपनी वेबसाइट से हटाइए, वरना मुझे ये रिपोर्ट करना पड़ेगा आपके प्रिंसिपल को. ये उसने मैडम
यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। जी, तो फिर आप जहाँ से उनकी वो रिपोर्ट करिए, जी पहले उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है उनको इतनी बातें ना मालूम हो। यू सी, कोई भी क्राइम क्यों करेगा? इंफॉर्मेशन की कमी से प्लेजरिज्म बहुत हो रहा है। और आइंदा अपने कोई नोट्स किसी को मत दीजिए, क्योंकि यू बिकम पार्टी टू इट। इनफैक्ट इसीलिए है ये सेशन कि आपको बेसिक नॉलेज तो मिल जाएगी, एंड ऑल्सो आपकी जो डिफरेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ आंसर हो जाएंगे। सो द बेस्ट थिंग वुड बी दैट यू अप्रोच दैट पर्सन। सिंस यू सेड मित्र हैं, तो आप उनसे बात करिए कि वेबसाइट से हटाएं और उसको सरेंडर कर दें कंप्लीटली। आपको इस वक्त तो वो क्वाइटली कर सकते हैं, और आपका नाम हटाने का कोई अधिकार नहीं था उनको, है ना? तो ये आप अप्रोच लेके देखिए, नहीं है तो फिर आप जैसे मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं उन्होंने पहले अपलोड कर लिया है, तो इसकी वो आप पुष्टि कैसे करेंगे कि ये आप ही का है? आपकी हैंडराइटिंग में है ना? कुछ चीजें हैंडराइटिंग में है और कुछ जी, हैंडराइटिंग में नहीं है। तो जितनी उसको उन्होंने हैंडराइटिंग हो तो उतनी तो आप रिट्रैक्ट कर लीजिए। यू सी, टैली करके लगा दीजिए और क्या, टैली करके वहाँ पे इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हैं। जी, ओके मैम। राइट, ऑल राइट। सो शैल वी मूव अहेड? तो Yes, ma'am. Yes, all ma'am. right. So Yes, ma'am. okay, so you see, the problem is that if I'm a supervisor और मैं एक थीसिस पे साइन करती हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है अगर उस थीसिस में प्लेजरिज्म है। अगर स्टूडेंट ने प्लेजराइज किया है उस थीसिस में और मैंने नोटिस नहीं किया, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी हो जाती है, क्योंकि आई एम सपोज टू रीड एवरी वर्ड ऑफ द थीसिस। अगर मैंने उस पर साइन किया है तो इसका मतलब ये है कि आई हैव नोटिस्ड इट एंड अप्रूव्ड इट। तो apart from the person concerned, the supervisor, the teacher, everybody, you see, ये जो इन्होंने किया है आपके दोस्त ने, इससे यूनिवर्सिटी भी रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। जिस यूनिवर्सिटी में है, जिस डिपार्टमेंट में है। जी, और ये जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में जी जी हुआ है, जी और जी, मैं एडेड कॉलेज में वहाँ पे सेल्फ फाइनेंस कोर्स में था, और ये सेल्फ फाइनेंस में ही थे। नोट्स जो थे वो ऑलरेडी पहले के थे। जी। तो ये आप उनसे बात करके देख लीजिए, ये बात हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। ओके ओके मैम। So now ये the next thing is that plagiarism is a disloyalty. देखिए, क्राइम तो है अपनी जगह, it's a disloyalty. Yes, ग्राउंड लेवलिंग है जी, Dr. ग्राउंड Shah, लेवलिंग में इतनी चढ़ गए ऊपर 4 फुट सान चढ़ी हुई बाउंड्री पर तां पूरी होगी के नहीं Dr. शहबाज मिर्जा, ये तो नहीं तो वैसे इस कौन छा मार रहे थे Dr. शहबाज मिर्जा, please यूर जैसे पीछे से बछड़ा है उसने पर तरेवा 4 फुट तरेवा इसमें ऊपर या ऊपर छड़ी लगी बस ऊपर तरने जरूर तीन छड़ी वो तो नहीं तार लगी। Dr. शहबाज मिर्जा, आप प्लीज अपना माइक म्यूट करें। Don't worry, ma'am. He is being removed. All right. So let's carry on. So intellectual property is violated. The university loses its reputation if it is proved, and the candidate
loses his or her reputation. Then another problem is a false claim of authorship. People think that things which are very old can be republished. For example, किसी की कहानियों को लेके publish कर दीजिए अपने नाम से, thinking ये unknown author है. ये भी बहुत हुआ है. और फिर किसी ने रिपोर्ट किया, उनके किसी फैमिली मेंबर ने देखा और ये हुआ कि पकड़े गए and they are punished. Right. So, most important of all, plagiarism results in loss of integrity and credibility. उसके बाद आपके बात पे कोई यकीन नहीं करेगा. All right. Now what happens is that I'm going to give you some important definitions of plagiarism. Right? So first we'll talk about the definition of Stanford University. So write this down, please, so that you have one or two. Stanford, the use without giving reason and proper citation appropriate credit or acknowledging the author or source of another person's original work. Whether such work is made up of code, formulas, ideas, language, research, strategies, writing, or other form. तो देखिए कोड्स, फॉर्मूलाज, ग्राफ्स, मैप्स आप कुछ नहीं कॉपी कर सकते. अगर आपने एक मैप लिया तो आपको उस एटलस का सोर्स साइट करना है. साइटेशन हेल्प्स अस. कुछ भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उसे साइट करना है. प्रॉपर साइटेशंस. नाउ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, द डेफिनेशन बाय ऑक्सफोर्ड. Use of a writer's ideas, phraseology, without giving due credit. कोई phrase भी हम नहीं ले सकते. That means more than 3 words. All right. Now we come to something called self-plagiarism. अब ये थोड़ा tricky है. Supposing I have an article or I have a presentation, right? मैंने एक presentation बनाया जिसको मैंने एक conference में use किया.
Is it all right for me to use it in another conference? No, ma'am. It's not. This is self-plagiarism. And self-plagiarism is wrong. अब ये आपको बहुत लगेगा कि ये तो मैंने लिखा है, तो ये गलत कैसे हो गया? See, if you are using something that you have written and published or used earlier, तो आपको अपने आप को cite करना पड़ेगा. You will have to acknowledge that I have presented this paper in that conference and I'm using parts of it here. This presentation was used in another forum and I'm using it once again with some changes. जैसे कि आप अपनी PhD thesis publish करते हैं, तो आप उसमें लिखते हैं that some of the material is taken from my PhD thesis. All right. So this is essential. Now, is it possible at all that we repeat a lecture? देखिए, बहुत से instances होते हैं कि हम lecture repeat करते हैं. अब ये कौन से cases हैं? Let's see. Now, ये cases ऐसे होते हैं कि जैसे कि general awareness lectures. For example, if we are talking about COVID, right? We are talking about cleanliness, hygiene, how to keep something clean. Then keep your surroundings clean. We are talking about environment. Now, if this is for public awareness, then we can repeat the lecture. These lectures can be reused. They can be reused for a new contribution to form the background. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, Yes. एक क्वेश्चन है मैम. मैम, जैसे हमें बोला जाता है पीएचडी सबमिशन से पहले कि एक पेपर पब्लिश होना चाहिए जो आपके पीएचडी से हो, राइट? सो तो तब तक पब्लिश तो हुआ नहीं होता हमारा थीसिस, तो हम उसमें क्या रेफरेंस डालेंगे कि ये हमारे पीएचडी में आने वाला है या उसे कैसे करेंगे मैम? देखिए, जो भी आपके पीएचडी के रिक्वायरमेंट्स है वो तो डिग्री के रिक्वायरमेंट्स है. You understand? And this is a degree which is a formatted degree. इसके रूल्स तो डिफाइंड है. जी, ओके मैम. ठीक. तो आपके जो ये पेपर्स है, रिलेटेड पेपर्स हैं, ये तो एग्जामिनर को मालूम है, सबको मालूम है that you are doing it within rules. ओके मैम. Okay. So anything which is complying with rules is perfectly all right. Okay, ma'am. Thank you. Okay. So ye we were discussing when can you reuse material. See, once is when the lecture is for general awareness. Number 2, as a background to a new contribution. Number 3, the audience is different. For example, cultural awareness पे एक paper है, right? We talk about a certain art form in India. अब आपको invite किया है lecture series के लिए on a fellowship where you have to lecture throughout Europe. तो आपका lecture repeat हो सकता है. That is allowed because content same है मगर audience बिल्कुल different. Similarly, जैसे awareness है how to say life skills. You see, after COVID, what happened? ये awareness बहुत promote की गई कि छोटे बच्चों को थोड़ा housework आना चाहिए. जो घर में eldest child है, उसको इतना समझना चाहिए घर के बारे में कि छोटे भाई बहनों को कुछ meals दे सके. अगर पेरेंट्स दोनों बीमार हैं तो जो बड़ा बच्चा है वो अपने छोटे भाई बहनों को कम से कम केला, चिप्स, इस तरह की चीजें कहाँ रखी हैं
वो लेके किस टाइम देना है, पानी, दूध, तो इतना काम बच्चों को आना चाहिए। तो इसकी अवेयरनेस स्प्रेड की जा रही थी कि अगर फिर किसी किस्म का प्लेग या एपिडेमिक आता है, पैंडेमिक आता है, तो हमें पहले से प्रिपेयर्ड होना है। तो घर के अंदर हमें इस टाइप के इंतजाम करने, तो अगर ये अवेयरनेस स्प्रेड करना है तो the lecture will be the same. As you go from one colony to another, then you will be repeating the lecture. All right. So it can be the same if it is in different places and it is coming through a social welfare forum. So lectures can be repeated. All right. So this is not necessarily plagiarism. All right. Then we have to know how, as teachers, we can detect plagiarism. That is a very important question. You see, हमें अपने, अब मैं क्योंकि पीएचडी की बात कर रही हूँ, या आप एमए की क्लासेस अगर पढ़ाते हो, एंड इवन इन बीए, अगर आपने असाइनमेंट दिया है, असाइनमेंट तो सब लोग देते हैं, आपने स्टूडेंट से कहा असाइनमेंट सबमिट करना है, अब आप स्टूडेंट से कहिए कि आउटलाइन अपनी हैंडराइटिंग में लिख के लाए। यू अंडरस्टैंड? 1/3 ऐसे अपनी हैंडराइटिंग में लिख के लाए, रफ नोट्स मंगाइए, तो केसेस ऑफ कट एंड पेस्ट कम हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने रूल्स बनाए हैं, यू सी आपकी क्लास आती है, इन अ न्यू क्लास you have to make your rules. You make your rules. आगे चल के आप अपने रूल्स वायलेट मत करिए। आप 2-3 रूल्स बनाइए, 5 रूल्स बनाइए, लेकिन पूरे सेशन में उनको फॉलो करते रहिए। अगर आपने अपने ही रूल्स खुद वायलेट कर दिए तो स्टूडेंट्स नॉन सीरियस हो जाएंगे। You understand? They will not learn. They will learn how to make rules and violate them. कि रूल्स बनते हैं मगर कहाँ फॉलो होते हैं। All right. Then आप पूरी राइटिंग प्रोसेस में, यू सी ओरल प्रोसेस में तो हम बहुत आसानी से इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट राइटिंग प्रोसेस में हम उनसे कहते हैं कि ये लिख के आप यू सबमिट इट ऑन दिस डेट। ओके? But we are not involved in the writing process. It unfortunately also happens with the PhDs. And then आपके students को आप adequate time दीजिए, enough time for submission of assignments. अगर आप कहेंगे 3 दिन में असाइनमेंट दे दो, तो चांसेस ज्यादा है कि वो कॉपी करेगा। यू नो, सीनियर के नोट से करेगा, उससे करेंगे ये लोग, इंटरनेट से हुए, so much is available, free sites are available, and some students even buy assignments, right? अगर आप enough time देंगे तो this will not happen. They will find time to research. पहले उनसे कहिए कि 10 minutes before you begin teaching, give 10 minutes and say, bring me your reading list. What are you reading? Even if they are reading on the internet, internet पे भी काफी अच्छी sites है, तो आप उनसे कहिए bring your reading list. First day look at the reading list, then next day आप उनसे कहिए कि outline लेके आए. Then the next day, the introduction, and then, you know, see it in parts. It may be difficult to look at all the students' works, but आप कुछ random तो देख सकते हैं.
on every turn, look at a different student's work and use it as an example. And then you can ask them to use online writing labs, OWL, OWL. Purdue University का lab बहुत famous है, and they even help you with the corrections. अगर बच्चे connect करें या हम भी connect करें, you see sometimes you are caught in language, so they help you, they reply. Right. Student से कहिए कि style sheets use करें. MLA, APA, these are style sheets which are available online. उससे उसको इनफैक्ट क्लास में समझाइए कि ऐसे लिखना है. तो अगर आप गाइड करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो इंस्टेंसेस ऑफ प्लेजरिज्म विल reduce. Right. All right. There are many types of plagiarism, and now I would like to talk about those. So, the first type is clone, C-L-O-N-E. So it means submitting someone else's work word for word as one's own. Submitting someone else's work word for word as one's own. Number 2, Control C. A written piece that contains significant portions of the text from a single source without alterations. मतलब स्टूडेंट्स ने बड़े-बड़े चंक्स ले लिए. सिंगल सोर्स के बाद क्या होता है? सिंगल सोर्सेस without alteration, without change. एक और सोर्स है, एक और टाइप है प्लेजरिज्म का, फाइंड रिप्लेस. फाइंड हाइफन रिप्लेस. तो इसमें what people do is they replace words, keywords को बदल देते हैं. So the act of changing keywords and phrases but retaining the essential content of the source in a paper. Next, remix. An act of paraphrasing
from other sources and making the content fit together. Recycle, and making the content fit together. Recycle, the act of borrowing generously from one's own work without citation. Because, you know, people feel that if it is their own work, why do they need to cite? So this is a bit difficult to understand, but it makes sense. Because, you know, actually you are at an advantage. फायदा तो आपका ही होगा, आपका citation बढ़ेगा. Recycle, Vijay Pratap, should I repeat recycle? Recycle, Yes, the act of borrowing generously from one's own work without citation. Without citation. To self-plagiarize. Next, hybrid. HYBRID. Hybrid, the act of combining perfectly cited sources. मैम पीपीटी नहीं है इसकी? एक्सक्यूज मैम, Yes, मैम पीपीटी नहीं है इसकी, उस पे और अच्छा दिखाई दे जाता. नहीं पीपीटी नहीं, oral है. the act of combining Perfectly cited sources with copied passages without citation in one paper. Next, mashup. MASHUP. Mash up. So, like the name, it means that you take from many sources and you make a mash. So, copied material from different sources without citation. Next, 404 error. 404 error. 404 error. You see, ये sometimes हमेशा कहीं ना कहीं आ जाता है 404 error. जी, तो इसका मतलब होता है the page does not exist.
So what happens is that sometimes, in fact, a lot of times, people give citations that don't exist. Sometimes they give page numbers that do not exist, excuse me. They give page numbers that do not exist. अब आप thesis submit करने वाले हैं, एक पेज नंबर रह गया, आपको मिल ही नहीं रहा है, तो the tendency is that the candidate sometimes फेक कर देते हैं, यूं ही लगा देते हैं कि कौन देखेगा, कोई भी पेज नंबर मेकअप करके लगा दिया या साइटेशन लगा दिया, तो आपने कोई गलत नाम दे दिया, परहैप्स एक आध केसेस में ये निकल भी गया, बट दिस इज कॉल्ड नॉन एग्जिस्टेंट. दैट मीन्स ये साइटेशन जितना ढूंढिए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फ्रॉड है. या कभी ग्राफ बनाना है या आपको चार्ट बनाना है तो उसके फिगर्स आपने फेक कर दिए. That is a tendency. So that kind of plagiarism is called 404 error. Then aggregator. AGGATOR. Aggregator. Now, this type of plagiarism, the citations are there, but there are more citations than actual work, original comments. यानी citation से भर गया है पेपर और original comments नहीं है, तो वो भी सही नहीं है. So that is one kind of plagiarism कि आपने citation से भर दिया. Now that is different because अभी तक हम ये कहते आए थे कि it is all right if you are citing, but it's not all right if your entire work is citations. Then retweet. Retweet, that is your work, that is the work has very little interpretation and is very close to the original text. तो आप टेक्स्ट को भी नहीं रिपीट कर सकते, आपके पास ओरिजिनल कंक्लूजन्स एंड कमेंट्स आपके जनरेट होने चाहिए. तो इस सब को करेक्ट कैसे किया जाए? You should use plagiarism checkers. Plagiarism checkers. ये आमतौर पे यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है. देखिए, प्लेजरिज्म चेकर अगर आप यूज करते हैं तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है. अगर आपने प्लेजरिज्म चेक यूज किया तो और रिपोर्ट आई दैट इट्स 50% plagiarized, but they have marked it. You know, they have highlighted where the plagiarism is, and you can correct, remove the plagiarism. तो आपका वर्क प्लेजरिज्म फ्री हो जाएगा. आमतौर पे PhDs में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्लेजरिज्म अलाउड है, क्योंकि बुक्स के टाइटल्स हैं, ऑथर्स के नेम्स हैं, वो तो नहीं बदल सकते, राइट? सो a certain amount of plagiarism is permitted, say within 10% is permitted in student essays, in PhDs, etc. तो आपको प्लेजरिज्म चेक के बाद इतना रिड्यूस करना है. जब आप उसे देखेंगे तो you may be surprised
You did not think this was plagiarism, but the checker told you that it's plagiarism. तो submission से पहले अगर plagiarism check हो जाए, so it is very helpful. Right. So these are tools which have been introduced, and they help us all to remove plagiarism. And जब आप ये सारी बातें होती हैं तो हमारे academic moral values improve करते हैं. You see, in sessions like these, we have a general sense of awareness that this is the right way to work. The other thing is that we have a more practical approach. We know what to do. अक्सर हम प्रॉब्लम में फंस के हमें सही जवाब नहीं मिलता कि हम क्या करें. So this is what you have to do. And जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है वो इससे बहुत इम्प्रूव कर जाती है, क्योंकि हम वी आर नॉट आउट टू कैच एनीबॉडी. यू सी, क्लासरूम में हम किसी को पकड़ने नहीं बैठे. द क्लासरूम इज द प्लेस where we make mistakes. We are supposed to make mistakes and have them corrected. So for a student, any learning experience is not a matter of shame. तो अपने स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस दिलाइए, आप खुद कॉन्फिडेंस से इन चीजों को अप्रोच करिए. देखिए, एकेडमिक्स को बहुत साल दिए हम लोगों ने. अगर हम उसको अपना करियर बना रहे हैं तो हम ये पैसे के लिए नहीं कर रहे. बहुत सी दूसरी चीजें जो हम कर सकते हैं, हम इसको वैल्यूज के लिए कर रहे हैं. एंड ओरिजिनल academics is one of the higher achievements of a teacher. All right. So it's 10:20 and I'll stop here. अगर आपके कोई questions हैं तो आप पूछिए. Yes. Ravi Prakash. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning. मैम, मैं पूछना चाहता हूँ कि सेल्फ प्लेगरिज्म जो खासकर हमारे खुद के लैंग्वेज की वजह से आता है, उसको कैसे काउंटर करें? उसको आप उसको साइट, you have to cite it. Okay, citing our own work. Yes, you have to cite your own work. And second thing I want to ask. हेलो. हेलो. यस मैम, सेकंड थिंग मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा फ्री सॉफ्टवेयर है जो हम यूज कर सकते हैं प्लेगरिज्म चेक? yes, many free softwares. That is, one is www.dupli-checker. Okay. Pardon, ma'am? Dupli, D-U-P-L-I C-H-E-C-K-E-R, dupli-checker.com. डुप्लीचेकर. हाँ, dupli-checker. मैम, इस पर हिंदी का भी चेक कर सकते हैं? किसका? हिंदी में. हिंदी लैंग्वेज. हिंदी लैंग्वेज के लिए आपको मालूम करना पड़ेगा. आमतौर पे तो वो चेकर इंग्लिश के हैं, ये चेकर्स. हिंदी के लिए आपको हिंदी डिपार्टमेंट से मालूम करना पड़ेगा. आई एम श्योर कोई तरीका तो है, क्योंकि हिंदी तो हर चीज हिंदी में तो ट्रांसलेट बहुत आसानी से हो जाती है इंटरनेट पे. यस, आई हैव वन क्वेश्चन मैम. यस. अभी हम लोग को 1000 वर्ड का एसे लिखने के लिए आया है असाइनमेंट, तो उसमें कुछ हम कहीं से कॉपी किए, कुछ लिखे, तो उसके लिए क्या रेफरेंस देने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल. कॉपी क्यों किया? कॉपी ही तो आइडिया हम लोग कहाँ से लाएंगे? कहीं से पढ़ेंगे, सीखेंगे, तब तो आइडिया डेवलप करेंगे. उसी आइडिया को तो नोट कर रहे हैं. नहीं, आइडिया जो है, दूसरों के आइडियाज आप नहीं ले सकते. आपको आइडिया अपना रखना है. औरों के आइडियाज पढ़ के आपको कोई ओरिजिनल आइडिया पैदा करना है. देखिए,
ये आपको एग्जाम्पल देती हूं मैं कि फॉर एग्जाम्पल एक पोएम है, एक कविता है, जिसमें ऑथर ने, पोएट ने लिखा है नेचर के बारे में, हरियाली के बारे में, ठीक, उसकी तारीफ की है। अब आपने क्लास में बच्चों को पढ़ा दी ये कविता, उसके बाद जो है उसको ओरिजिनल कैसे करें? आप बच्चों को नेचर वॉक पे ले जाइए, बच्चे से कहिए 1000 वर्ड ऐसे लिखिए ऑन एनीथिंग दैट द चाइल्ड सो, चाहे वो मिट्टी के ढेर पे लिखे, चाहे वो घास पे लिखे, तो जो चीज उसने ऑब्जर्व की है खुद, उस पे लिखे। पानी पे लिखे, अगर कहीं पे लेक के पास आप ले गए, तालाब के पास आप ले गए, उसमें मछलियां देखी तो उस पे लिखे, तो उससे ओरिजिनलिटी आती है। अब आप कहीं से पढ़ेंगे, आपने बिल्कुल, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो टॉपिक आपने चूज किया है तो वो क्या है, कैसा है, एनवायरनमेंट में चूज किया है, तो उस पर आप लिख रहे हैं, आपने पढ़ा, मगर आपको लिखना पड़ेगा जो चीजें उसके बियॉन्ड है। यही तो एकेडमिक्स का चैलेंज है कि हमें उसके ऊपर उठना है। ये तो जैसे अंग्रेज आए थे और उन्होंने हमको कुछ बातें बताई, हम वहीं तो नहीं पड़े रहेंगे ना, हम उसके आगे जाएंगे, उसको अपने कंट्री पे अप्लाई करेंगे, अपने नेशन पे अप्लाई करेंगे, अपने सर्कमस्टेंसेस पे अप्लाई करेंगे। या कुछ कहा गया 1970s में, वो जरूरी नहीं कि हर बात रेलेवेंट हो इस वक्त। तो इस वक्त जो आप आसपास देख रहे हैं, जो आपकी सोसाइटी है, कम्युनिटी है, आपका इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें जो नई बातें हुई हैं वो रिकॉर्ड करनी है। अक्सर ये होता है कि हम उन बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम समझते हैं कि ये बहुत बेकार लगेगा अगर हम ये लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ही ओरिजिनलिटी है, जो चीजें हम छोड़ देते हैं। जब आप दूसरों की किताबें पढ़ रहे हैं, आपको आइडियाज आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आइडियाज नहीं आ रहे, तो जब वो हमारे दिमाग में आते हैं तो वो चीजें हम छोड़ देते हैं कि ये कहीं बहुत बेवकूफी की बात ना लगे। वो ही ओरिजिनल आइडियाज है। ऑल राइट, प्रतिमा सिंह, यस मैम, यू हैव यस। अगर हमने कोई रिसर्च पेपर जैसे हमारा छप गया है, तो क्या हम उसे किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में हम उसको यूज कर सकते हैं? या किसी से अगर रिसर्च पेपर छप गया है तो हम उसे किसी कहीं पेपर ग्रुप में प्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ, आपको बताना पड़ेगा कि ये यहाँ छपा है, और एक चीज आपको करनी पड़ेगी कि कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे। आप बैकग्राउंड के लिए उसका 1/3 आप प्रेजेंट कर सकते हैं, 1/3। रीना दुबे, डॉक्टर रीना दुबे। हाँ जी मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि पीएचडी के बाद जी, अगर हम अपनी पीएचडी में से कोई रिसर्च पेपर निकालते हैं तो क्या वो प्लेगरिज्म में आएगा? नहीं, क्योंकि वो आपकी अपनी रिसर्च है। उससे अगर आप रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं तो वो प्लेजरिज्म में नहीं आएगा। जी, थैंक यू। Yes. Who else? Ma'am, I want to ask a question that whether some paraphrasing in introduction section is acceptable? Yes, paraphrasing is acceptable अगर आप ये सोर्स बता दें। अब आप किसी ऑथर की उसको पैराफ्रेज कर रहे हैं अपने उसमें, तो उसको एक्नॉलेज कर दीजिए। Yes. Okay, thank you. एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मैम अगर हमारी पीएचडी थीसिस पब्लिश हो गई है, ऑनलाइन आ गई है, तो उसमें से हम कोई अपना चैप्टर पब्लिश कर सकते हैं एज अ रिसर्च पेपर और रिव्यू आर्टिकल? आप उसको, उस मटेरियल को यूज तो कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा।
कि मेरे थीसिस में है मेंशन। दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं वैसे अपने आप को भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ओके मैम। बिल्कुल उसी ढंग से ये। थैंक यू मैम। यस, उसके बारे में सेल्फ कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। जी मैम। हाँ, आप ये अब बात आ सकती है कि लोग क्या सोचेंगे, मैं अपने आप को साइट कर रही हूँ, लेकिन इसमें ये ही डिजायरेबल है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ऑल राइट, सो इज एवरीथिंग क्लियर? Any more questions? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Who has a question? All right, then. It was a great pleasure being with you. I'm sorry. Thank you, ma'am. It was a Yes, very ma'am. useful and interesting session. Thank you very much. All right. Interesting and useful. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. 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 Thank you, ma'am.